Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मैं सादिक कमानी आपके सामने एक ऐसे गेस्ट को लाया हूँ जो अपने आप में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सोशल फिलैंथ्रोपिकल काम कर रहे हैं। जो WF जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ KSIMC है उसके प्रेसिडेंट है, उनका सेकंड टर्म है। आइए उनसे जानता है कि वर्ल्ड फेडरेशन एक ऐसी एंटिटी है जो क्या काम करती है, कैसे फॉर्म हुई, क्या उनके ऑब्जेक्टिव है, लोगों की वो कैसे मदद करते हैं। तो हमारे सामने जो गेस्ट है आज शेख सफदर जाफ़र, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। थैंक यू शेख सफदर जाफ़र, आप इंडिया आए हैं एंड वी आर ऑनर्ड टू हैव यू ऑन आवर शो। प्लीज़ टेल अस WF बेसिकली है क्या एंड कब ये फॉर्म हुआ था, कैसे ये फॉर्म हुआ था? जी, सो द वर्ल्ड फेडरेशन जो है 1976 में उसकी इब्तिदा हुई एंड इट स्टार्टेड एज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन to organize the activities of the Khoja Shia International Committee worldwide, but was not limited to providing services to the Khoja community, but for the wider Shia community and humanity at large, alhamdulillah ta'ala. That is how it got established with only one motto: we exist to serve. जैसे हर एक एंटिटी फॉर्म होती है तो उसके बाद कोई मैकेनिज्म फैक्टर्स होते हैं कि वो किस तरीके से फंक्शन करेगी। सो WF किस तरीके से फंक्शन करती है? बिकॉज मैं समझता हूँ कि शिया कम्युनिटी अक्रॉस द ग्लोब है। अब किस तरीके से WF का वो क्या क्या मैकेनिज्म फैक्टर्स हैं? जी, तो वर्ल्ड फेडरेशन जो है एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। वी आर अ रजिस्टर्ड चैरिटी इन यूनाइटेड किंगडम। दैट इज़ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 6 डिफरेंट रीजन्स। तो हमारे रीजन्स में से अफ्रीका फेडरेशन है, दैट हैज़ अ मेंबरशिप अराउंड 40 जमात्स that are federated under Africa Federation. Africa Federation is a member of the World Federation. Correct. इसी तरह पाकिस्तान फेडरेशन है, इसी तरह इंडिया फेडरेशन है। इंडिया फेडरेशन में the largest जमात is Mumbai Jamaat. And then you have the Council of Gujarat that will go around 30 plus Jamaats equal to Council of Gujarat. So these form under the India Federation. इसी तरह हमारा NASIMCO है, North American Muslim Organization, takes care of North America and Canada, all the Jamaats within North America and Canada. Then we have the Council of European Jamaats, around 15 odd Jamaats. इसी तरह हमारा Australasian Federation है। तो like that we are 6 federated organizations that are a member of the World Federation. हमारा एक governance structure होता है। The president is elected by the entire membership of the world community, and then you have office bearers elected every 3 years, and then we have executive councils that puts us into question, or rather seeks accountability of the work that we do. So we exist to serve. We have a clear process of aim and objectives. हमारे 3 हदफ है, 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नंबर 1, propagation of the madhab of the Ahlul Bayt. Propagating our faith is a very important, in fact, the essential ingredient of the organization. Number 2, educating the community. By the community, the Muslim, the wider Shia community, and if resources allow, for the wider Muslim and community and humanity. And the third, importantly, is alleviation of poverty through economic upliftment of the community. These are the 3 broad objectives जिसकी बुनियाद पर हम लोग ये काम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि आपके 3 हदफ है कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ल्ड फेडरेशन के, तो फर्स्ट इज प्रोपगेशन ऑफ मज़हब अहलुल बैत। उस पर आप क्या काम करते हैं? किस तरीके से मज़हब अहलुल बैत को आप प्रोपगेट करते हैं दुनिया भर में? जी, हम लोग एटलीस्ट 70 कंट्रीज में काम करते हैं। आवर रोल रियली इज़ व्हाट आवर अइम्मा हैव सेड एंड द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट कुनु लना ज़ीना, बी अ सोर्स ऑफ ज़ीनत फॉर अस। बाइसे ज़ीनत बनो हमारे लिए, do not be a source of humiliation for us. So that is the objective, that through our akhlaq, through the best approach of serving humanity, we soften the hearts of people towards that beautiful faith that have taught us what humanity is. Alhamdulillah, we work in more than 70 countries globally, almost in every continent. We provide support both through publications, through social media, and through active engagement, and also in humanitarian activities where there are disasters anywhere in the world. WF has a humanitarian arm, WF Aid, that provides support across the board. So those are the broad areas through which we provide support. We also have an International Center of Advanced Islamic Research where we carry out research on contentious, challenging issues facing our time. We have artificial intelligence to the challenges of bioethics and so on and so forth in the world. How do you analyze this? What is the Islamic perspective? हमारे youths को किस तरह तरबियत होनी चाहिए? All those aspects are part of the tabligh activities. We provide support, for example, to more than 17,000 students through a curriculum. हमारा एक मदरसा का curriculum है, तरबिया curriculum, where we provide education in a systemic manner, training our teachers and providing them the best output so that they can
disseminate the values of Islam across the children. And as you said, you have a curriculum for madrasa, right? Yes. तो ये अगर किसी बच्चे को वो curriculum चाहिए या किसी बच्चे को मदरसा ज्वाइन करना है तो वो कहाँ पे अप्रोच करे, कैसे ज्वाइन करे? आपके क्या हर जमात में वो मदरसे अवेलेबल है जी, या कुछ कुछ स्पेसिफिक जमात में है, उसका मैकेनिज्म जी हमारा एक मदरसा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है. वी हैव क्रिएटेड पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह. इट्स अ फुल टाइम टीम. दे हैव डेवलप्ड अ होल करिकुलम, ऑलमोस्ट 600 लेसन्स फ्रॉम द एज ऑफ 3 साल का बच्चा जब आए 16-17 साल तक पूरा करिकुलम है. So we work with the regional federations to roll out the curriculum globally, and we put conditions that the teachers must be trained. So alhamdulillah, here in India, in Mumbai for example, we already carry out the MC curriculum with the Kesar Bagh Trust here. Alhamdulillah, that work is ongoing, and we are very open to other madaris in Gujarat or in other parts of India who want to take our curriculum on board. We have a full-fledged team. We can train the trainers, and then the regional federation can roll out its own curriculum. That's the process we do. In Europe, all madrasas use it. In America and Canada, all our madaris use it. In Africa, it's the same. And in India, we have started gaining that momentum, and we are ready to support where the communities are ready. And one last question on madrasa. Yeah. जो curriculum आपने बनाया है, क्या वो हमारे मराजे जो इस वक्त मौजूद है, क्या उनके ये अप्रूवल के बेसिस पे ये curriculum को बनाया गया है या फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सैयद सिस्तानी हफिज़हुल्लाह के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है उनके ऑफिस के साथ. जो भी हम करते हैं, हमारे जो उलमा है जो उनकी तायद करते हैं, वो हम आगा के मर्जियत के ताबे है. We do nothing without the tacit approval, either explicit or implicit approval of the Office of His Eminence. So सफदर भाई, सेकेंडली जिस तरीके से कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट होता है, राइट, उसमें बहुत सारे पिलर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें स्टार्ट होता है कि हर एक बच्चे को ये इंश्योर करना होता है कि वो एजुकेटेड हो, क्योंकि ओवर द स्पैन ऑफ 10 ईयर्स या 20 ईयर्स जो आज एजुकेट बच्चे हो जाएंगे, लिटरेसी रेट इंपॉर्टेंट हाई हमारी होगी, तो उतना ही हमारे बच्चे डेवलप भी होंगे. सेकेंड पिलर हो गया हेल्थ केयर. थर्ड पिलर हो गया इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट. अगर आज किसी के पास पैसा नहीं है या घर नहीं है तो वो अपना अखराजात को पूरा कैसे करेगा? तो WF इन 3 पिलर्स में क्या करता है? सो हमने जो पिलर्स डिफाइन किए, नंबर 1 इज एजुकेशन. एजुकेशन के साथ फ्यूचर उनका रोशन होता है. अल्हम्दुलिल्लाह, द वर्ल्ड फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड ज़ैनबिया चाइल्ड स्पॉन्सरशिप स्कीम फ्रॉम इंडिया. दिस स्कीम हैज़ बीन रनिंग फॉर ओवर 30 years now. We provide primary, secondary and higher education support through our institutions, through Jamaats and charitable trust. India के अंदर, for example, India and Pakistan collectively we are supporting more than 5,000 kids with primary, secondary and higher education. Alhamdulillah ta'ala. We believe from a Khoja community perspective, हमने 100% हदफ कर लिया है, that we achieved. But we want to support the wider Shia community. So this is where we try and aspire to meet the needs of others as well. तो ये एक system चल रहा है alhamdulillah. And we have so many qualified people who are coming out and now are providing support to the Zainabiyya scheme itself. Very nice. Through generational changes. Yesterday I was in Ahmedabad and I met one individual who was a recipient, a very poor background. Today he employs more than 200 people. MashaAllah. Alhamdulillah, with industries across India. That is one of the success we see. The second pillar is housing. I must say that housing has been a challenge. Mumbai is a very expensive place. The per square feet cost of the land is huge. Mumbai has huge housing requirements. इसी तरह गुजरात में भी housing requirements बहुत है. Alhamdulillah ta'ala, Allah की तौफीक से by 2026 we will have established more than 200 homes for people across India, of which at least 90 plus will come from Mumbai itself. जो पालघर रेसिडेंसी का प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह मरहूम मुल्ला असगर मेमोरियल के नाम से, I would say this is a huge opening that Allah has given tawfiq for us to work closely with India Federation and Mumbai Jamaat to achieve the aspirations of people, which I believe will cover at least 40% of the housing needs. और मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह कि अल्लाह अगर हमें तौफीक दे तो हम मजीद जाके पूरा needs achieve कर ले, and then we can support the wider community that really needs our support. Alhamdulillah. And the third pillar is economic upliftment through microfinance loans. Mumbai Jamaat, for example, provides Unnati scheme. We want to do much more in this area, plus in the Gujarat as well, other parts, even across India to the wider communities. By providing small microfinance loans, we have seen people who have transformed life. एक खातून थी गुजरात में, उनको support किया गया था. She was just stitching clothes with small whatever she had. Today, alhamdulillah, she has a jeans factory. इसी तरह cooking में भी, they used to start with basics and now they have alhamdulillah restaurants. तो इसी तरह आगे progression हो तो
एक uplift होता है society, तो they can move to the next level of maturity inshallah. So one more important thing जो एक community के लिए requirement होता है, so basically वो होता है health care. जी. So क्या WF health care को emphasis करता है और उसमें क्या क्या चीज़ें वो perform करता है? Health में हमारा एक aspiration और ख्वाब है इंशाल्लाह कि हम एक बेहतरीन hospital community का establish करें इंडिया के अंदर. I think India has all the great capabilities. Right now we work with India Federation and Mumbai Jamaat to provide support to communities, inpatient or outpatient or pharmaceutical. Alhamdulillah, I have seen the system in Mumbai Jamaat. World Federation provides some of that support, the rest of the support comes locally. Likewise, Gujarat mein bhi cases hote, we're trying to support. In other parts of the world, in Pakistan we provide. So in Pakistan we have our own hospital, Fatimiyya Hospital, run by the Jamaat, alhamdulillah. And I aspire and hope that inshallah one day Mumbai Jamaat can run a hospital as well as in Gujarat with the support of India Federation and the wider community globally. तो उसमें अभी बहुत काम करना है. India is a place where I believe we can invest more inshallah on healthcare. Inshallah, and actually it's a great achievement whatever you have done so far. So if I have to be very honest and if I have to ask you कि आपके एक the first term जो था आपका last year complete हुआ. If I have to ask you कि on a scale of 1 to 10, how would you rate yourself? Yeah, how would you rate your entire team? What would be your rating? It's a relative question. There were 3 objectives. Let's just look at the scoring of each. When you talk of education, I would say 10 out of 10 because there is no Khoja community student who can today say that they are deprived of education. Right. For the wider community, the wider Shia community, there is a lot of work to be done. But I would say from 2 to 3 where we were today for the wider community, besides Khoja, we are at 5 right now. So it's still a way to go. As far as housing is concerned, we were almost at 0. Right. Today, alhamdulillah ta'ala, with almost 40% of the needs in Mumbai met and others, I would say we have moved to 5 now, but we still have a long way to go, inshallah. Then inshallah. And when you look at microfinance and those aspects, alhamdulillah, we are progressing as well. And then there have been the biggest project which I feel from a tabligh side is that we have established an international center of advanced Islamic research. इसमें बहुत काम हो रहा है, तबलीगी काम हो रहा है, आउटरीच का काम हो रहा है, पब्लिकेशन का काम, हमारे चैलेंज को समझने का काम हो रहा है, बच्चों के मदद से. I would score us at 8+ on that one, inshallah. There is always room to improve, so we can't score higher than that, inshallah. Right, and I think this is your second term, right? Inshallah. तो इस second term में जो भी आपके objectives है, आपको लगता है कि आप वो औजे कमाल तक अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंच पाएंगे या फिर उसमें भी काफ़ी चैलेंजेस आपको लगते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करते हो, हर जमात हर कंट्री आप विजिट करते हो. सो हाउ डू यू थिंक ये पॉसिबल होगा? Traveling helps in pushing the agenda. When you travel, you try and inspire, you try and support the regional federation, you try and support the jamaats. तो आपके presence से क्या होता है, काम मज़ीद बढ़ते हैं, उनके तवक्कात भी बढ़ते हैं. We have to manage the तवक्कुआत जो कौम के होते हैं. Resources limited होती है. मैं हमेशा कहता हूँ World Federation, World Bank नहीं है. We have limited resources, but हमारी कौम अल्हम्दुलिल्लाह generous community है, वो देती है और मैं बहुत encourage करता हूँ खास करके हमारे Indian fraternity को कि वो मज़ीद donation दे. Important donors के लिए क्या है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और गवर्नेंस. ट्रांसपेरेंट हो, गवर्नेंस अच्छा, अकाउंटेबिलिटी हो, तो मैं यकीन रखता हूँ कि कोई रिसोर्स का मसला नहीं है, काम करने का मसला है. डू इट प्रॉपरली, ट्रांसपेरेंटली, अकाउंटेबली और पैसे आएंगे. सो आई वुड से तवक्कुल मेन चीज़ है. चैलेंजेस तो आते रहेंगे, चैलेंजेस बढ़ते रहेंगे, लेकिन अब अल्लाह पे तवक्कुल है तो मैं आपको कहता हूँ सादिक के अल्लाह ओपन्स एवेन्यूज वी कैन नॉट इवन कॉम्प्रिहेंड. हमने कभी सोचा नहीं था कुछ चीज़ें जो हुई है, जो हो रही है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस तवक्कुल के साथ अगर हम मज़ीद काम करेंगे तो इंशाल्लाह वी विल ऑल कलेक्टिवली बी एबल टू वर्क टुगेदर इंशाल्लाह. एंड वन लास्ट क्वेश्चन. सो जैसे आपने ये सारे चीज़ों के ऊपर जो आप काम करते हैं, सो ये सब प्लान्ड एक्टिविटीज़ है. नाउ लेट्स से कभी कभी कोई एडॉक एक्टिविटीज़ या अनप्लान एक्टिविटीज़ आ जाती है. जैसे एक एग्जांपल, कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे कोई लैंडस्लाइड हुआ या कहीं पे ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ कुछ हो गई या कोई वॉर जोन हो गया, तो क्या उसमें भी WF कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है? बहुत एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह. हमारे पास एक ह्यूमैनिटेरियन विंग है WF8. कहीं भी कोई भी इमरजेंसी होती है दुनिया में, वी हैव अ टीम, वी आर एन NGO, वी आर द ओनली 2 ऑफ द शिया ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव ECOSOC स्टेटस एट द यूनाइटेड नेशन. हमारे ग्राउंड स्टाफ होते हैं, हमारे एजेंसीज होती है ऑन द ग्राउंड. अभी मसलन पाकिस्तान में फ्लड्स हुए थे तो वी वर देयर. इंडिया में भी जब अर्थक्वेक हुआ था कच्छ के अंदर, वी वर देयर. अदर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, टर्की का अर्थक्वेक था, सो मेनी प्लेसेस वेयर एवर देयर इज अ ट्रेजेडी, वी आर देयर टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज. एंड वी डू इट इन 2 phases. हमारा फर्स्ट फेज होता है इमीडिएट रिकवरी, वाटर, फूड, सैनिटेशन, हेल्थ, मेडिसिन वगैरह. फिर लोग चले जाते हैं. We stay behind. On the second phase is rebuilding their homes. आसान तो. For example, अभी floods हुए थे recently in the neighboring country. We built more than 200 homes.
इसी तरह कच्छ में हुआ था, तो we build homes, and that is where we have the expertise to help them in settling them down. Alhamdulillah. and thank you so much Sheikh Safdar Jaffer. I know आपका टाइम बहुत लिमिटेड है, बट वी थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी दैट यू गेव अस, एंड इंशाल्लाह वी विश यू ऑल द बेस्ट टू परफॉर्म द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्टिविटीज़ दैट यू डूइंग सो फार. सो नाज़रीन, ये थे शेख सफदर जाफ़र, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन KSIMC. आप उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ सुना होगा इनके बारे में पहले भी, और आज भी आपने इनको समझा होगा कि इनके दिमाग में क्या इनका एजेंडा है, WF कैसे परफॉर्म करेगी अगले 3 साल या आने वाले 10 सालों में. तो अज़ीज़ान मोहतरम, देखते रहिए चैनल वन को, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, भूलना नहीं, और ये पैगाम इंसानियत को दुनिया भर में फैलाइए. वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.